Hello dear students, the topic which we are going to discuss is matrix multiplication. Condition for matrix multiplication is that columns of matrix A should be equal to the rows of matrix B. कोई दो मैट्रिसेस आपस में तभी मल्टीप्लाई की जा सकती हैं जबकि मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या बराबर हो मैट्रिक्स बी में रो की संख्या की। यहाँ पे हमने ए और बी दो मैट्रिसेस लिया है। मैट्रिक्स ए 1 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 1 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कहने का मतलब ये है कि हियर देयर इज ओनली 1 रो एंड 3 कॉलम्स। In matrix B, there are 3 rows but single column. So इनका जो प्रोडक्ट मिलता है C, that will be 1 into 1 order matrix. Once again, I repeat that the two matrices are multiplicable when column in matrix A is equal to row in matrix B. तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या 1 है, रो की संख्या 3 है। मैट्रिक्स बी में रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम की संख्या 1 है। तो कॉलम इज इक्वल टू रो इन मैट्रिक्स बी, देयरफॉर दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेबल एंड वी कैन गेट देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने इसको एक एग्जाम्पल से दिखाया है। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13। यहाँ पे ये दिख रहा है कि दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1 into 3। 1 into 3 कहने का मतलब है कि यहाँ पे रो की संख्या केवल 1 है, लेकिन कॉलम की संख्या यदि हम बात करते हैं तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो हियर रो इज ओनली 1 बट कॉलम्स आर 3। मैट्रिक्स बी, matrix B we have written here as 3 into 1 order matrix. 3 means there must be 3 rows. First row, second row and third row. Column is only 1. So here column is only 1. B11, B21, B31. These are the elements. And these two matrices can be multiplied because column in matrix A is equal to the row in matrix B. And we can get, how we can get them, how we can get the product of these two matrices. So A11 will be multiplied by B11. We will put plus sign in between. A12 multiplied by B21 plus A13 multiplied by B31. So this is, we have written here product of A into B matrices. A11 into B11, then we put plus sign. A12 into B22, then plus sign. A13 into B31. These are added, then we will get 1 into 1 order matrix only. So as you know what is the rule for multiplication? Call row 1 is multiplied by column 1 because here there is only 1 column. So we have multiplied row 1 into column 1. If there would be 2 columns, then row 1 into column 1, then row 1 into column 2. Because these two matrices are multiplicable, as there were rows in column in matrix A was equal to rows in matrix B. Therefore, these two matrices were multiplicable. Matrix multiplication is not possible if columns in matrix A is not equal to the rows in matrix B.
यदि मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर नहीं होती है तो दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते हैं. हियर ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर 2 into 1. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 2 into 1. मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 4 into 2. Therefore, their multiplication is not possible. 2 into 1 what shows? There are 2 rows and 1 column. Matrix B shows that there are 4 rows and 2 columns. These two matrices cannot be multiplied because first row multiplied by first column. So here multiplication is not possible in these two matrices. We have written it over here. For matrix A is 2 into 1 order matrix because here there are 2 rows. First row, second row. But when we talk about column की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे केवल सिंगल कॉलम है. और मैट्रिक्स बी की यदि बात करते हैं तो मैट्रिक्स बी में रोज की संख्या 4 है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. बट कॉलम की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो देयर आर ओनली 2 कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. Therefore, these two matrices are not multiplicable as column in matrix A is not equal to the rows in matrix B. If columns in matrix A is equal to rows in matrix B, the two matrices can be multiplied. Suppose matrix A is of 2 into 3 order matrix. Matrix B is of order 3 into 2 matrix. The product which you will get will be 2 into 2 order matrix. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जैसे हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर यहाँ पे है दैट इज 2 into 3. 2 रो 1, रो 2. कॉलम की संख्या यदि हम बात करते हैं तो कॉलम की संख्या यहाँ पे 3 है. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. मैट्रिक्स बी की यदि हम बात करते हैं रो की संख्या 3 है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. कॉलम की संख्या की यदि हम बात करते हैं मैट्रिक्स बी में तो ये 2 है. फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम. और इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 into 2 ऑर्डर का होगा. अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? A11 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन वी विल टेक फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है A11 इंटू B11, जैसा कि नीचे लिखा है A11 इंटू B11. वी हैव पुट हियर ब्रैकेट साइन फॉर क्लियरिटी. देन A12 इंटू B21, A13 प्लस साइन लगाते जाएंगे प्लस A13 इंटू B31. तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम. A11 into B11 as we have written here. Yes, this was A11 into B12, A12 into B22, A13 into B32. Here we have written A11 into B12, A12 into A12 into sign must be here. We have put by mistake, it is put plus sign, into sign should be there, not plus sign. Sometimes we commit silly mistakes. So A11 into B12, A12 into B22, A13 into B32. Here it will be B32, not A32, because here it is written B32. So B32. A21 into B11, then we will take second row and we will take first column. A21 into B11, A2 plus sign, A22 plus B21 plus A23 into B32
Then we will take first this row and second column, A21 into B12 plus A22 into B22 plus A23 into B32. As we have done here, A21 into B12 plus A22 into B22, A23 into B32. Here is an numerical example. A is equal to 1, 2, 3, 4, 2, 7. It is of 2 into 3 order matrix. Here there are only 2 rows and column 1, 2, 3, 3 columns. So 2 into 3 order matrix. B is 4, 6, 5, 8, 2, 3. When we talk about rows and column, here rows are 3, first row, second row, third row, and columns are first column and second column. So it is 3 into 2 order matrix. Then these two matrices, whether these two matrices can be multiplied or not. So these two matrices can be multiplied because column in matrix A is equal to row in matrix B. Here column in matrix A are 3, rows in matrix B are 3. So these two matrices are multiplicable. We can get their product. 1 into 4 plus 2 into 6 plus 3 into 5. 1 into 4 plus sign we have put, then 2 into 6, then plus sign, 3 into 5. Then we will take this first row and we will multiply with the second column. 1 into 8 plus 2 into 2 plus 3 into 3. As we have done here, 1 into 8 plus 2 into 2 plus 3 into 3. Then we will take second row, 4 into 4. Second row and first column. 4 into 4 in plus 2 into 6 plus 7 into 5. Then second row into second column. 4 into 8 plus 2 into 2 plus 7 into 3. We have done here first row into first column. 1 into 4, 2 into 6, 3 into 5. Then first row into second column. So this is 1 into 8, 2 into 2, 3 into 3. Then second row into first column. 4 into 4 plus 2 into 6 plus 7 into 5. Then we have taken second row and second column. This is 4 into 8, 2 into 2 and 7 into 3. So we will get here 4, 12 plus sign, we will put plus sign, 4 plus 12 plus 15. Here we will get 8 plus 4 plus 9, 16 plus 12 plus 35, 32 plus 4 plus 21. So here we have written 4, 12, 15, 8, 4, 9, 16, 12, 35, 32 plus here it should be plus 4 plus 21. So this will be 4 plus 12, 16 plus 15 is equal to 31. This will be 8 plus 4, 12 plus 9, 21. This will be 16 plus 12 plus 35, 63. 32 plus 4 plus 21, 57. So the product will be of 2 into 2 order matrix. So this was your
matrix multiplication. I hope you understood the concept, and please comment if you are having any suggestion. Thank you.